So is stress good or is stress bad? To a certain extent. To a certain extent. Pehla question. Dusra question. And does it affect the body? Oh yes. Body and mind is So many Does chemicals. it affect the body in a bad way or a good way? Bad way most of the time. Let's take a small story. एक डियर है, वो डियर बड़े प्यार से घास खा रहा है एंड उसके पेट में थोड़ी सी इंफेक्शन है, सो इम्यूनिटी सिस्टम लगी हुई है उससे लड़ने के लिए. वो जो घास खा रहा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर रहा है एंड देयर दिस डियर पीसफुली इज ग्रेजिंग ग्रास एंड नाउ अ लायन टर्न्स अप. व्हाट हैपेंस? द मिनट द डियर सेंसेस द लायन, He runs. a fight and flight response switches on inside him, a stress. And what that does is, what does the deer need to do now? क्या जरूरी है? भाग बॉस, जिंदगी बचा, खा जाएगा शेर, right? भागो. And भागने के लिए he needs strength in the limbs. So what does the body start doing? The fight and flight response, which our doctors will tell us better of course, will immediately start pumping the heart so that maximum blood reaches the limbs. Correct? Sugar is energy. So sugar is released into the blood. Blood sugar goes up. Right? उस sugar को तोड़ने के लिए oxygen चाहिए. So the breathing goes up. Right? Imagine how perfect the system is. Breathing बढ़ गई, pumping of the heart बढ़ गया, blood is like going to the legs, sugar बढ़ गया, and the deer runs for his life. End of story. He runs like crazy. Now tell me, मैं एक कार में बैठा और मेरे पीछे चोर पड़ जाए, what do? I press on the accelerator, correct? उस टाइम पे अगर गाड़ी में एसी लगा, will I keep it on? पहले तो एसी बंद कर दूंगा बॉस, let that power go to the accelerator, forget the AC. म्यूजिक लगा हुआ है तो will I keep it on? I will shut it off. Disturbance नहीं मांगता है, only one focus, just escape, correct? The same happens with the deer. ब्लड तो पहुंच गया पाँव में, शुगर भी पहुंच गई, एनर्जी भी पहुंच गई. अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है क्या कोई? नहीं. इम्यूनिटी सिस्टम की जरूरत है क्या कोई? वो शेर खा गया ना तो बैक्टीरिया शेर का प्रॉब्लम हो जाएगा, छोड़ दो, वहां एनर्जी मत वेस्ट करो. इमीडिएटली द बॉडी शट्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, शट्स ऑफ योर क्या कहते हैं ग्रोथ सिस्टम, शट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाई? बिकॉज सारी एनर्जी भागने के लिए चाहिए एंड द डियर रन्स फॉर हिज लाइफ. इज इट नॉट अ परफेक्ट डाइट, परफेक्ट मशीन? He becomes a super deer. He runs. किस्मत वाला deer था, बच गया. So this deer has a good stress. This is a good stress. He needs to run. Imagine. And now ये भागता है और बच जाता है. बहुत lucky deer था. He got saved. Tell me, 5 मिनट के बाद what is this deer doing? What do you think the deer is doing after 5 minutes? Grazing again. He's grazing again. As if nothing happened. The fight and flight is switched off. The blood goes back to normal. Immunity system is back to normal. Growth system back to normal. Everything back to normal. This is good stress. Because this is real stress. Life की बात थी बॉस. भागना ही था. तब ये नहीं सोच सकते क्या करना, शेर ही तो है. He won't do that. He will run. Right? Change of scenario. मैं भी उसी जंगल में खड़ा था. शेर मेरे पीछे भागा. What will happen? Same. Fight and flight on. I become a superhuman and I run like crazy. Again, good stress required, making me a superhero. बच गया. 5 मिनट बाद tell me what will I be doing? मैं भी बच गया शेर से. Thank God. वो कर रहे होते तो बहुत अच्छे होते. 5 मिनट बाद ऐसे होता मैं. WhatsApp, Instagram, Facebook. पता है. But every time I tell the story, the lion keeps becoming bigger. He comes, he's right, my back off. Even at night, I get only dreams about the lion. Any sound anywhere, there is only the lion. In my case, what has happened? Fight and flight on तो हुआ, off ही नहीं. अब prolonged period के लिए वो जो real है ही नहीं, जो खत्म हो चुका, जिसको छोड़ देना चाहिए था, is still on. अगर मेरे स्टमक में बैक्टीरिया होता, अब कौन लड़ेगा उसको? इम्यूनिटी सिस्टम तो ऑफ पड़ा है, ग्रोथ सिस्टम ऑफ पड़ा है. मोस्ट ऑफ अस नाउडेज आर एंडिंग अप विद अल्सर्स इन द स्टमक. मुझे पानी देना प्लीज.
are ending up with ulcers in the stomach. What is ulcer? In the stomach, acids are put in and food is broken. The worst kind of activity goes on there, right? It damages the complete gut lining. The growth system sees to it कि 4 दिन में पूरी लाइनिंग बदल जाए. But जब मैम आप स्ट्रेस में बैठे रहोगे पूरा टाइम और ग्रोथ सिस्टम ऑफ रहेगा, वो लाइनिंग जब चेंज ही नहीं होगी तो लेयर के बाद स्टमक विल गेट ईटन अप एंड देयर यू आर. राइट? सो स्ट्रेस इज नीदर बैड नॉर गुड. इट वाज गिवन टू अस बाय एवोल्यूशन टू सर्वाइव. Provided it is real, you must act. When it is imaginary, you must let it go.